Good morning. Good morning, sir. From your appearance, you look very bright and smart, and you are Thank you, sir. dressed properly. Except that this cold weather does not permit just a shirt. Sorry, sir. Actually, I had given my blazer for dry cleaning. That is why I don't. Are you feeling Thank you. cold in that case? No, sir. It's not cold. Sir. It's good. कहाँ के मेंस में क्वालिफाई किया आपने किस स्टेट में? Sir, Gujarat Judicial. गुजरात इज अ नाइस स्टेट. कोई कनेक्ट Yes, sir. और किसी तरह से कनेक्टेड है आप गुजरात से? अपार्ट फ्रॉम द No, no, sir. I'm not connected. I'm a resident of Shivpuri, Madhya Pradesh. एमपी, मध्य Yes, प्रदेश. sir. Yes, sir. और किस ईयर में आपने एलएलबी पास किया था? Sir, in 2024, I graduated. फ्रॉम वेयर? Sir, Damodaram Sanjeevaya National Law University, Visakhapatnam. इट्स अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. Yes, sir. तो इसमें क्लैट के थ्रू एंट्री होती है. Yes, sir. विशाखापट्टनम, साउथ इंडिया. Yes, yes, sir. लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आई? मध्य प्रदेश में तो हिंदी बोली जाती है. विशाखापट्टनम जब आप पहुंचे तो वाइजैक. Uh, No, sir. Actually, in the college premises, the faculties and the other students, we talk in English only. And in outside, the people there understand Hindi, very much Hindi, they understand. In Andhra Pradesh, many people understand Hindi. So, and I also try to learn the things, Telugu, there, small words, necessary words. खाने पीने का भी बहुत डिफरेंट होता है आपसे. Yes, sir. आप हॉस्टल में रहते थे वहां पे? Yes, sir. Residential college. हाँ जी, आई सी आई सी. तो हाउ डिड यू लाइक द एटमॉस्फेयर देयर? Sir, I like it very much. Visakhapatnam, sir, very good place, very nice city. Sir, the people there were also nice. And sir, I like the food. I like the South Indian food very much there. Sir, एकेडमिक्स पे वहां पे जोर था या नहीं? बिल्कुल पढ़ाई लिखाई sir, जोर से? आपस में आपके जो yes, पीर ग्रुप था, पढ़ने वाले बच्चे थे कि नहीं? yes, sir. All of them are, uh, all of them are involved in the studies. वेरी गुड. और वहां पे कोई नेवी का भी तो बहुत बड़ा कुछ बेस है वाइजैक में? Yes, sir. Southeastern Command, Eastern Command, sorry, Eastern Command of Naval Base. तो जो वहाँ Headquarters were there. नेवी का जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है वो किस रैंक का होता है? Sir, I don't exactly know that, sir, but may I take a guess? हम्म. Sir, Vice Admiral rank. हम्म. और आंध्र प्रदेश का चीफ जस्टिस कौन है? Sir, the current Chief Justice of Andhra Pradesh is Dheeraj Singh Thakur. Honorable Dheeraj Singh Thakur, sir. That is exactly it. When you address a person, Yes, sir. Yes, sir. It's my mistake. है ना, Sorry, sir. Yes, sir. not a friend, he is a senior person. Yes, sir. तो ये बताइए कि सीपीसी में सेक्शन 89 ऐड किया गया था, उसमें बड़ा जोर था क्योंकि जब बैकलॉग बहुत बढ़ने लगा Mhm. कोर्स में तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीके ढूंढे जाने लगे. तो Yes, sir. सेक्शन 89 के बारे में आपकी क्या राय है? उसमें क्या प्रोविजन है आपकी? उसके बारे में क्या राय है? Sir, Section 89 is very helpful from resolving the civil disputes हम्म. from a resolving the civil disputes point of view because sir, sir there is a code that justice delayed is justice denied. हम्म. So this provision helps in that thing that the person who come before the court for resolving the dispute and to get justice, that justice must be given to him in uh, as soon as possible. So the provision of Section 89 gives the alternative dispute resolution, हम्म. which helps the parties to dispute to resolve the dispute outside the court through the following methods. For example, sir, arbitration, where mediation, conciliation,
and sir through judicial settlement, lok adalat. हम्म। तो हर मुकदमा जो सिविल या जूनियर डिवीजन के सामने आता है वो मैंडेटरीली रिफर करना उसको जरूरी है मीडिएशन आर्बिट्रेशन या सेटलमेंट लोक अदालत के लिए, या कुछ देखता है, कुछ कंसिडरेशंस देखता है, उसके बाद वो तय करता है कि ये रिफर करने वाला योग्य है या नहीं? कुछ आपको आइडिया है? Sir, yes, sir. Sir, it is not mandatory that the every case which come before a court of law, it should be referred for the outside court settlement. So there are some aspects in which if any case come, then the necessary then court must court, court must allow for the outside the settlement dispute. For example, sir, negligence cases, sir, matrimonial disputes cases, commercial related cases. कैटेगराइज करें, मैं कैटेगरी नहीं पूछ रहा हूँ, वो प्रिंसिपल्स क्या है जिसके बेसिस पे कोर्ट तय करता है कि ये रिफर करने लायक है या नहीं? Uh, Sir, sir, Section 89 procedure which is given, it states that first court will write the situation of the matter and then give that resolution to the parties, and the parties may agree. They may have choice that if any changes or anything they want to done, they can do and then return it back to the court if they agreed that uh, we will ready for the out of court settlement. So sir, it is the consent of the parties also which is material. कंसेंट के बिना नहीं रेफर कर सकते? Sir, I sorry sir, I am not aware about this. बिटवीन mediation and arbitration, what exactly is the difference like? Sir, in mediation, generally the disputes, sir, the mainly the process. First is the process. Sir, the process in arbitration, there is one arbitrator and the parties. Uh, Before him, the matter will run Why just like where is it written that there will be only one arbitrator? It can be a panel of arbitrators, it can be yes, sir. the presiding arbitrator. Yeah, yeah, yes, sir. They are the choice of the parties. Why do you have Whatever. one arbitrator? Sorry, sir. You are sitting in the position of a judge while it is Yes, deemed sir. while giving an interview. तो आपसे वो चीज एक्सपेक्टेड है कि आपके आंसर में प्रिसिशन होगा, जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं वो उसमें इंक्लूड होंगे, Yes, sir. टर्मिनोलॉजी कुछ थोड़ी लीगल बेंट लिए होगी, कुछ तो उम्मीद की जाती है ना आपसे। Yes, sir. Yes, sir. कि जरा से इस तरफ अवेयर होने के बाद इसको दोबारा अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने का, कि Yes, मीडिएशन sir. में फर्क क्या है? Yes, sir. Sir, the first difference uh, is the category of the matter, category of the dispute, which is there, which will be resolved through arbitration or the mediation. Sir, in arbitration, generally all the commercial and or the monetary related disputes through resolved through the arbitration, and sir, all the matrimonial or family related disputes where there is where there is a more sensitivity, the all those matters are resolved through the mediation. Sir, in arbitration, the process is the arbitrator will decide. The parties will argue before the panel of arbitrators, and they will resolve. They will decide the dispute accordingly. And sir, in mediation, the mediator will uh, will talk to both the parties separately and combinedly, and then communicate with them the grounds on which they can come on the consensus, and through which the mediator will help in resolving the dispute. हम्म। तो विच इज अ बेटर मेथड आउट ऑफ द टू, एंड आप किसको फेवर करेंगे, मीडिएशन को या आर्बिट्रेशन को, और क्यों?
Sir, it is not like I will favor any one method, sir, because the arbitration methods procedure is different and it applied on the different category of matters, different type of disputes, and mediation is mediation. The method of mediation is applied on different types of disputes. So it is not preferable that I will choose one because because the working and the main core of the both the methods is different. In a commercial contract, if there is no provision for referring a matter to arbitration, can Yes, still the sir. matter be referred to an arbitrator or a panel of arbitrators? Sir, if there is no clause in the contract, then if at later point of time both the parties agree to go for the arbitration, then both the parties may enter into a separate contract and then they will go for the arbitration process. हम्म अच्छा, तो मीडिएशन में ये होता है कि परसुएड किया गया पार्टीज को, और पार्टीज Yes, sir. अल्टीमेटली खुद ही फिर फाइनली एक कंक्लूजन पे दोनों पार्टीज विलिंग हो जाती हैं, द मैटर एंड्स देयर। Yes, sir. इन कॉन्ट्रास्ट टू इट, द इनिशियली देयर इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कि आप अगर ये कोई डिस्प्यूट अराइज करेगी तो आर्बिट्रेटर को रेफर किया जाएगा, और आर्बिट्रेटर जो फैसला करता है दैट इज नॉट बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज। Yes, sir. आर्बिट्रेटर तो थोप देता है वो फैसला। Yes, sir. नाउ द पार्टीज आर बाउंड बाय इट, Yes, sir. है ना। Yes, sir. और इसीलिए जब थोपी हुई चीज होती है तो उसमें किसी न किसी एक पार्टी को ग्रज हो सकती है, ग्रीवेंस Yes, हो, sir. Yes, sir. वो अपील में जाना चाहे, इसीलिए अपील का जुरिस्डिक्शन बार किया गया है सेक्शन 34 के कन्फाइंस में। अगर कोई मैटर आता है ओनली Yes, देन sir. टेकन टू द कोर्ट। Yes, sir. मीडिएशन में दोनों पार्टीज खुशी खुशी एक चीज एक्सेप्ट कर रही है, आर्बिट्रेशन में फैसला थोपा जा रहा है, विच Yes, इज sir. द बेटर वे ऑफ द टू। Sir, I think, sir, in arbitration, we can say, sir, arbitration is a quasi-judicial process where the where the person who is sitting and who is adjudicating the matter, he is adjudicating after listening the both the parties. So, sir, it is like in a judicial process when court gives his decision or final judgment, then if one party who is not satisfied, he go for the appeal. So, sir, same with the arbitration also. If the party is not if any one party who is not satisfied, then the same can appeal before the court of law. आपकी शादी हो गई? So, sir, no, sir. नो। आपको, अगर आपके पेरेंट्स चॉइस देते हैं कि आप चूज कर लो जो लड़की पसंद है उससे तुम्हारी शादी करेंगे, वो बेटर है, या Yes, आपके sir. पेरेंट्स कोई लड़की लाते हैं कि भाई इससे तुम्हें शादी करनी है, करनी ही है, यू डोंट हैव अ चॉइस, दैट इज बेटर। Oh. अभी शादी नहीं हुई इसलिए ये प्रोस्पेक्ट ओपन है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप प्रिफर क्या करेंगे दोनों में से। Sir, I believe that, sir, I think that the forward, the prospective life, अरे which I will live. इंडिविजुअली फ्रैंकली बताइए आपकी सोच क्या है इस बारे में। Sir, मेरी सोच सर ये है कि I will marry with the girl of my choice, and I will talk to my parents and make them understand that, sir, the forward life which I want to live, I live with the person of my choice only because it's suitable for me. It's the person understands me and I'm comfortable with him. So that सर is इसका why. मतलब तो आपकी सोच पे अगर चला जाए तो मीडिएशन इज अ बेटर वे आउट। वो आपकी कंसेंट से होता है, दोनों पार्टी की कंसेंट से कंक्लूजन, एज कंपेयर टू आर्बिट्रेशन। Sir, uh, but sir, the arbitration and better way out. We can't choose one thing, sir, because
because sir, the process, the matters which were there, they solved through different way. Sir, because the family related matters, all the family related matters or all the marriage related matters, they नहीं, involve the मैं sensitivity. मैं उस मैटर की बात कर रहा हूँ जो आइदर वे सॉल्व हो सकता है, जैसे कमर्शियल डिस्प्यूट ही है, वो Yes, sir. मीडिएशन से भी सॉल्व हो सकती है और आर्बिट्रेशन से भी सॉल्व हो सकती है। तो उस Yes, तरह के sir. मैटर्स की आपसे बात कर रहा हूँ। कमर्शियल डिस्प्यूट्स में जैसे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है, अकाउंटिंग है, तो अगर Yes, कंसेंट sir. दोनों तय हो जाए कि भाई तुमने इसका 60% इनिशियली पैसा डाला था, दूसरे पार्टनर ने 40% डाला था, तो अब जो इसमें जो बचा खुचा है इस पार्टनरशिप फर्म में, एसेट्स में, उसका 60% Yes, तुम sir. ले लो, 40% वो दूसरा आदमी ले ले। तो ऐसे केसेस में द फैसला विल बी एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज इट हैज बीन अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ consensus between the two. Yes, sir. Arbitration में it is not like that. Yes, sir. Sir, if in any money related matter or any commercial related dispute, if the parties already agreed on some point, then sir, why they will go for a mediation or arbitration? That is what I am understanding, sir. कभी कभी Because ऐसा they have dispute there. Yes, sir. कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज में थोड़ी थोड़ी ईगो होती है, मिसट्रस्ट होता है, Yes, नाराजगी sir. होती है एक दूसरे की। और जब Sir. कोई इंडिपेंडेंट आदमी आता है उनको काउंसलिंग करने, मीडिएट करने उनके बीच में, देन दे सी सेंस, और उन्हें लगता ही Oh, है कि भाई जो हम 10 साल मुकदमा लड़के अपना समय और पैसा बर्बाद करेंगे, उसके मुकाबले थोड़ा कम ही आज की तारीख में हमें मिल जाए, तो हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे, कहीं बिजनेस में एम्प्लॉय करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, उससे हम ग्रो कर जाएंगे, जितने टाइम में वो मिलेगा उससे ज्यादा yes, पैसा sir. इन्वेस्ट करके या जैसे भी हम कमा लेंगे। तो थिंग्स Yes, लाइक, sir. तो एक इंडिपेंडेंट आदमी इस पे दोनों को फेथ होता है जब वो सजेशन देता है जो उनको लगता है कि रीजनेबली हमारा इंटरेस्ट भी वॉच करके लिया जा रहा है, तो वो खुशी Yes, खुशी sir. राजी हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है। Yes, sir. But sir, there is one more problem, sir. For example, sir, if any commercial dispute come and the parties send for the mediation, and sir, in mediation, the no conclusion or the parties didn't reach on any conclusion, then they again have to go for arbitration. So it's again makes the process lengthy only. So if the parties either resolve the matter through mediation or either resolve the matter through arbitration, that is the process. That may be the process, sir. एक चीज होती है एडजुडिकेशन, आपको पता है एडजुडिकेटर जिसमें अपॉइंट होता है, ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में अक्सर होता है कि पहले एडजुडिकेटर तय करेगा, उससे डिससेटिस्फाई होंगे तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। अक्सर ये क्लॉजेस होते हैं कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में। Yes. तो वो जो Uh, एडजुडिकेटर होता है उसके बारे में कुछ आपको आइडिया क्या होता है, कौन होता है, कैसे अपॉइंट होता है, और उसका फैसला किस हद तक मान्य होता है, किस हद तक बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज होता है? एनी uh, आइडिया? Sorry, sir. I'm not aware about this. मे बी इट्स बियॉन्ड योर सिलेबस, ऑल राइट। देखिए, मैं आपको कन्फ्रंट कर रहा था डिफरेंट चीजों से, एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशंस देके विच यू हैव नॉट थॉट अबाउट फ्रॉम बिफोर, बट Yes, sir. यू कंटिन्यू टू रिमेन कूल एंड काम एंड रैशनल थिंकिंग आपकी चलती रही, विच इज समथिंग वेरी वेरी गुड। जब भी Yes, आप sir. इंटरव्यू में जाए तो इस चीज को रिटेन करिएगा, दिस विल हेल्प यू अलॉट। हर एक से Yes, sir. नहीं वो सब कुछ जाने, लेकिन जितना जानता है उसके बेसिस पे उसकी सोच क्या लीगल लाइंस पे चल रही है या नहीं, रैशनली आंसर दे रहा है, डज ही रिटेन ए स्कूल, इज ही, Yes, डज sir. इन अ पोजीशन टू थिंक रैशनली एंड आंसर, वो चीजें आपकी अच्छी है, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी Yes, विद, sir. आई थिंक यू शुड परफॉर्म वेल। ओवर टू मिस्टर जैन। Thank you, sir. Thank you so much. Hello, Amandeep. जी अमनदीप, सर. जस्ट बिफोर स्टार्टिंग आपसे सर ने मेडिएशन और आर्बिट्रेशन के बारे में एक चीज पूछी थी, एंड यू सेड कि सर आर्बिट्रेशन और मेडिएशन में ना कि डिफरेंट मैटर्स पे एप्लीकेबल होता है, बट यस देयर सर. आर सर्टेन डिस्प्यूट्स लाइक सर ऑलरेडी सेड कमर्शियल डिस्प्यूट्स,
जिसमें आप yes sir, मेडिएशन में भी जा सकते हो और आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हो। तो माय yes sir, सजेशन इज, आप उसमें आपका आंसर ऐसे रिफाइन हो सकता था दैट सर व्हाई मेडिएशन, बिकॉज मेडिएशन इज कॉस्ट इफेक्टिव। yes sir, कॉस्ट इफेक्टिव है और मेडिएशन इज अ विन विन फॉर बोथ द पार्टीज, बिकॉज एज सर ऑलरेडी सेड कि आर्बिट्रेशन में तो क्या होगा, आर्बिट्रेशन इज जस्ट लाइक अ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, इनफॉर्मल yes कोर्ट sir, प्रोसीडिंग, जहां पर एक पार्टी विन करेगी, एक पार्टी लूज करेगी। yes sir, लेकिन मेडिएशन में ये बोला जाता है बोथ पार्टी विल विन। yes sir, तो अगर आपसे ये, अगर कभी ये सजेशन है कि मेडिएशन क्यों प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। yes sir, बिकॉज इफ यू हैव रेड द आर्बिट्रेशन एक्ट, आपको आर्बिट्रेशन एक्ट के शेड्यूल 4 में फीस भी बताई हुई है, जो आर्बिट्रेटर की फीस होती है, तो वो बड़ी yes sir, कॉस्टली पड़ती है। yes sir, ठीक है। yes sir, सो अमनदीप, माय क्वेश्चन टू यू इज दैट a civil suit has been filed before your court, yes sir, you issue summon to the defendant. yes sir, Defendant came before to you and yes orally sir, submit that, sir, I have to give him this money. yes sir. Then how will you proceed in that case? He has Sir, not filed his WS till now, yes sir, but he yes came sir, and orally submit to your court that, sir, yes, I have to give him this money. yes sir. Uh, Sir, I will, if the defendant agrees what the issues raised by the plaintiff or what the problem which is raised by the plaintiff, then sir, the matter is almost on on a conclusive stage Okay. because yes sir, because both the parties agrees. So and in civil law, the main issue is that any civil matter which come before a court of law, the court just have to resolve that issue, that matter, which is anyway, which is related to anything, because the no, it doesn't involve any punishment or anything which is any crime which is committed by the defendant. So what I believe is that if the issue is resolved, then court will pass the decree upon the basis of that resolution only. Amandip, your answer should also reflect the legal provision on which you Sir, are stating. sorry, sir. Sir, Order 23, sir, withdrawal compromise, which states that if parties agrees on the consent Amandip, decree. I guess there is no compromise between the parties, neither the withdrawal nor the compromise. It is the defendant who just submit to the court. He is admitting the amount that he has to pay. It Yes, is sir. not a compromise decree. Sir, order 15, sir, resolution of the issue at the first hearing. Yeah. Yes, sir. So think before answering the question. Amandip, my Okay, sir. next question is from criminal law. Yes, sir. A person is convicted for the offense of robbery. Yes, sir. He was convicted from the trial court. Yes, He sir. filed an appeal before the Honorable High Court. Yes, sir. Honorable High Court, बिकॉज उसकी सेंटेंस अपील सुनने में जब आई, उसकी सेंटेंस मोर देन 50% हो चुकी थी। Yes, sir. तो हाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या नॉर्म्स के हिसाब से हाई कोर्ट ने उसके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया, ये बोलते हुए कि अभी अपील को सुनने में टाइम लगेगा। Yes, sir. तो उसकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया, अक्यूज बाहर आ जाता है। Yes, sir. बाहर आने के 2 महीने बाद वो फिर एक रॉबरी कमिट कर देता है। Yes, sir. जैसे ही वो रॉबरी कमिट करता है, पुलिस उसको एप्रीहेंड कर देती है और आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो आप वडोदरा है, आपके सामने अपीयर कराती है। Yes, sir. पुलिस उसकी कस्टडी मांगती है और वो बेल एप्लीकेशन फाइल करता है। Yes, sir. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वेदर यू आर एंटाइटल्ड टू हियर हिज बेल एप्लीकेशन और नॉट। Sir, I'm entitled to hear the bail application. ओके, Yes, sir. आई एम अगेन Sir, स्टेटिंग। because
You should base your answer on the legal provisions, Yes, sir. not on that you're thinking that I think. Sir, in BNSS, section 480 is given where it was stated that uh, bail at ba- bail in the non-bailable offenses. How magistrate should give the procedure is given there in that provision that how a magistrate should give the bail in the non-bailable offenses. But So Amandeep, where, there are sir, certain conditions given in under that section also. If the yes, accused sir, has been previously convicted for an offense which is punishable yes, with sir. 7 years or more. Yes, sir. Yes, sir. That is that on that point, sir. I'm coming, Yeah. sir. So if the offender has previously convicted for any offense, and the current offense which is committed by him is a cognizable offense, and the previous offense is punishable with punishment of more than sir, either death, either more than 7 years, then sir, in that situation, the magistrate should avoid to give him the bail application, uh, to allow the bail application. And sir, there are certain conditions also written if the person is infirm, sick. But sir, that condition is not applicable in the situation when the person is also committed the crime and he has been previously convicted. So again, the question comes: are you entitled to give him bail or not? You told me So the provision. yes, He sir. was Sir, previously no, convicted sir. for the offense of robbery by the Yes, sir. trial court. His appeal is Yes, pending. sir. His sentence has been suspended by the High Court Yes, sir. by giving the reason that the appeal will take time because of the long incarceration. उसकी 50% से ज़्यादा sentence हो चुकी है. That is why he has given suspend his sentence got suspended. Yes, sir. Sir, sir, the High Court, the benefit which is given by the High Court to the accused, that is for the suspension of the sentence, that will automatically cancelled when the offender has committed any offense, because the suspension of sentence which was given by the High Court was also on the basis of some uh, points that the accused must not commit the same crime, or he must not hamper with the investigation. On some conditions, he has given the suspension. So, sir, if he revoke or he broke any of the conditions, then his suspension will cancel automatically. And if the police arrest him for the subsequent offense, then the judicial magistrate has power uh, to issue warrant against him or arrest him and don't allow his bail application. Amandeep, my question is slightly different. You said everything except the fact that for the subsequent offense, you are correct to the extent that when he has done the offense, his suspension got cancelled. You are Yes, correct to sir. the extent. So now my question to you is that whether you are allowed to give him bail in the subsequent offense. Uh, uh, sir, I'm allowed to give him bail. I has power to allow. I has power if. But sir, the problem is that the provision is not allowing me to give him the bail. So I'm not allowed. Amandeep, if provision is not allowing you, then how can you give a bail? That is the Sir, scenario, yes, suppose sir. just a second, Amandeep. If Yes, you sir. are Yes, sir. saying the provision is not allowing you and still you can give him bail, that means the anticipatory bail should also be filed before judicial magistrate first class. No, Provision is sir. also not that allowing you. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I want to correct my answer. Sir, I have power to hear the same bail application, but I don't have power to allow him the bail. Okay, Sir. thank you. Amandeep, over to you, Kifi ma'am. Just tell me one point. What do you understand by mean profits? Ma'am, mean profits, ma'am, if any person illegally hold any property and uh,
ma'am, and receiving any benefits or profits from that property, then that profit which is received by him is a mean profit because he is not entitled to receive that profit. And what things are exempted from that provision? Oh, ma'am. Oh, sorry, ma'am. Like I'm unable to. anything he does not have to pay to the owner? Ma'am. Oh, sorry, ma'am. I'm unable to recall. Any improvements he made on the property? Have you Yes, read ma'am. it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any improvements or anything which he has made for that he need not to pay to the actual owner, the real owner. Yeah. Okay. Yes, ma'am. Just tell me the difference between redemption, foreclosure, and sale. Uh, ma'am, the foreclosure, ma'am, redemption foreclosure is that, ma'am, when the when mortgager, when uh, Tell me ma'am, redemption कौन करता है? Redeem कौन कराता है? Just tell me this thing. ma'am, the concept of redemption is that when the when the mortgager pays the amount for the loan amount which is borrowed from the mortgagee for the security which he has given to the mortgagee, and when he returns that amount and that property which he put for as a purpose of security returned to him, so that whole process is called redemption. तो redemption कौन कराता है? Simple answer. Ma'am, uh, the party himself, uh, sorry, ma'am, court, Mortgager redemption के लिए apply करता है mortgagee. ma'am, mortgage redemption. Then what is foreclosure? Ma'am, foreclosure is that if mortgagee unable to pay the amount within the specific time limits or within the conditions, then ma'am, mortgagee will apply for the foreclosure before the court to so that he got the absolute right over the property which is secured by the person for the amount borrowed. Then what is the difference between foreclosure or sale? Ma'am, in sale, ma'am, the ma'am in sale from the inception, it is the intentions are clear that the person will take money from him and then other party will give the property for that purpose. So it is absolute in it is absolute that one person is receiving the money and other person is giving against him the property in the consideration. But ma'am, and but ma'am, in redemption in foreclosure, ma'am, it was not from the inception that the property will absolutely transfer to the mortgagee. It will transfer on a later point of time when the conditions will not be fulfilled by the mortgager or he not pay the borrowed amount according to the conditions. Thank you, Mandeep. Thank you. Thank you, ma'am. अगर किसी खेत में कोई फसल खड़ी है और वो फसल मॉर्गेज की जाती है अगेंस्ट मनी, Yes, sir. तो फसल तो एक टाइम के बाद अगर रीप नहीं की जाएगी तो खराब हो जाएगी. Yes, sir. तो यहाँ पे जिसके फेवर में मॉर्गेज क्रिएट की जाती है उसके क्या राइट्स होंगे? देखिए, ऐसे एग्जांपल्स को लेके जब आप चलेंगे तो आपको ये रिडेम्पशन, फोरक्लोजर, सेल कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएंगे. इसीलिए Yes, कहते sir. हैं कमेंट्री अगर आप थोड़ी सी अच्छी पढ़िए तो Yes, sir. कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाती है एंड देन यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस. Yes, sir. Yes, sir. जैसे क्लॉग ऑन रिडेम्पशन भी एक चीज होती है, आपने पढ़ा होगा. Yes, sir. तो आपका आंसर था, इट वाज स्लाइटली कंफ्यूजिंग. इट वाज शोड कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थोड़ी सी कम है. उसको उस Yes, तरफ भी sir. की जरूरत है. अगर आप करेंगे
और कॉन्सेप्ट अगर बेहतर समझ में आ जाएगा तब ऑब्वियसली आप डिसीजन बेटर कर पाएंगे, आपका आंसर ज्यादा प्रिसाइज होगा, मोर एक्यूरेट, थिंग्स लाइक Yes, दैट. sir. Performed reasonably well. You stand good chances of success. That is my feedback to you. Thank you, sir. मनदीप, जस्ट वन मोर सजेशन, अपना जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिए. एंड एज सर ऑलरेडी सेड, यू हैव अ वेरी ब्राइट चांसेस फॉर ऑफ सिलेक्शन. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड. Thank you, sir. थैंक यू सो मच.